all students. In this video we shall continue our grammar topic clauses. हमने अभी noun clauses थे वो देखे, अब adverbial clauses of condition थे, वो कौन कौन से थे और किस तरह से सेंटेंस में यूज होते हैं, how can we identify it, वो भी हमने देखा. अब adverbial clauses of time, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. Adverbial clauses of time are used to say where something happens by referring to a period of a time or to another event. The subordinating conjunction like after, before, since, when, while, where, whenever, till, as, etc. are used. यानी कि कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा एक्शन हो रहा है या फिर बनता है कभी भी, एंड दे रिफरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, और वो क्या रिफर कर रहा है, पर्टिकुलर कोई पीरियड या पर्टिकुलर कोई टाइम रिफर कर रहा है, किसी टाइम को दिखा रहा है, स्ट्रेस कर रहा है, देन वी आर यूजिंग लाइक इट आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हेन, व्हाइल, वेरेवर, टिल, एज. तो यहाँ पे एग्जांपल है जैसे कि आई अराइव्ड आफ्टर ही हैड started. The patient had died before the doctor arrived. So here is a use before, after is dedicated. It's refer to time. I have never seen her since she was 10 years old. His father died when he was young. Someone called while you were out. Whenever I smiled, she smiled back. I shall wait here till you return. As I was leaving, the phone rang. अब यहाँ पे जो सारे यहाँ पे कंजक्शन है वो यहाँ पे यूज किए गए हैं, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस हैं, उस तरह से उनको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डाला है, बट उनका जो मेन मोटिव है, मेन मीनिंग उनका एज ए टाइम रिफर करना है. तो यहाँ पे वो टाइम दिखा रहे हैं, एक पीरियड दिखा रहे हैं, टाइम का पीरियड कि इस समय पे ये हुआ था. When we refer to the present or the past, the verb in the time clauses has the same tense that it would be have in our main clauses. जैसे कि she was standing by the door when I heard her speak. He haven't talked to him since he arrived. He looks after the children while she goes to school. फिर है when we are mention an event and the time clauses which will happen before an event, referring to the main clauses, we use the present perfect tense and the time clauses. तो present perfect tense का use होगा whenever the event refer to the main clauses. When you have taken your lunch, you came to me. Inform us as soon as you have reached here. It's an example of this. We use when and while as when we refer to a circumstances and which something happens or happening. यानी कि when and while कब यूज, when and while as कब यूज करते हैं, जब भी कोई circumstances है, वो कुछ भी होने वाला है या फिर हुआ है, तो तब हम यूज करते हैं when, while, as. The doors open when I pressed this button. While he was in the house, there was a loud knock at the door. I watched her as she combed her hair. We can use when, after, once to talk about an event happening immediately after another. यानी कि कोई ऐसी इवेंट है जो एक के बाद एक हुई है, ऐसी इवेंट एक्शन को जब हम रिफर कर रहे हैं, then we use generally when, after and once. Like when he died, his sons came to me for help. The mother goes off in search of food after the eggs have hatched. Once the damage is done, it taken many years for the system to recover. We use as soon as when we went to refer to one event happening after a very short time. जैसे कि they heard a loud explosion as soon as they entered their house.
when we use no sooner, the time clauses being with then. अब no sooner जनरली then के साथ यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, no sooner had he arrived then he had to leave again. Remember, always remember कि no sooner है वो हमेशा then के साथ यूज होता है in the sentence. Whenever we are use no sooner, we have to use then in the sentence. No sooner had he sat down than the phone rang. No sooner had he asked the question than the answer came to him. फिर है next जो है rule है वो when we use hardly, the time clauses being with when or before. मोस्टली जब हम हार्डली टाइम जो दिखाने के लिए यूज करते हैं तब when and before it's used for it. Hardly had he entered the house when the phone rang. She had hardly arrived when she had left again. He had hardly opened his eyes before she asked him to leave. फिर उसके बाद का रूल है if we want to say that a situation stopped when something happened, we use till or until. Until और till का कब यूज होता है जनरली? then situation stopped when something happened. कोई सिचुएशन है वो रुक जाती है किसी कोई एक्शन के चलते या कोई एक्शन जब बनता है तब. तो I waited for her till या until जो भी आप लगा सकते she came back. Let's wait till the rain या फिर let's wait until the rain stops. We use since to refer to a situation that they began to exist at the particular time and they still exist. यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन है वो कभी एग्जिस्ट करती थी पर्टिकुलर टाइम में, तब हम since का यूज करते हैं. We use the past tense, simple tense and the time clauses. I have not met her since she was a child. They have known each other since he liked that. यानी कि मोस्टली सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है whenever we are use since. रिलेटिव क्लोजेस हैं. अब जो हमारा लास्ट जो काइंड ऑफ क्लोजेस है वो है रिलेटिव क्लोजेस. रिलेटिव क्लोजेस क्या है? तो रिलेटिव क्लोजेस does the function of the adjectives and the sentence. That is why it is also called an adjective clauses. We put a relative clauses immediately after the noun which refer to the person or group we are talking about. यानी कि कभी जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं इमीडिएटली जब हम रिलेटिव क्लोजेस यानी कि कोई पर्सन है कोई थिंग्स है उसके लिए हमने वो यूज किया है क्लोजेस, देन वी आर से इट इज अ रिलेटिव क्लोजेस. लाइक द बॉय who came into the house was my friend. Who is a relative clauses we are using for the boy. The house which our neighbor bought is made of stone, which is used for a house. Then कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन है, कोई भी ऐसी नाउन है उसके लिए हमने यूज किया है दूसरा अनदर प्रोनाउन यूज किया है, फिर कोई दूसरा नाम यूज किया है, कोई दूसरा क्लोजेस यूज किया है उसके लिए, then it's a relative clauses. तो हम आगे जो relative clauses हैं, then a relative clause is essential to the clear understanding of the noun. It defines or qualifies. For example, who came into the house. It's a relative clauses without which it will not be clear to which boy we are referring. यानी कि यहाँ पे क्लियर भी नहीं होता कभी कभी जब भी रिलेटिव क्लोजेस हम यूज करते हैं तो मोस्टली क्लियर नहीं होता कि हमने किसके लिए यूज किया है. Here is example, who came into the house. Here is not clear कि किसके लिए हमने बोला है, but who is the refer to relative clauses for something or someone. डिफाइनिंग एंड द नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोजेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. थैंक यू एंड टेक केयर.